I think we can start. Yes. Hi, ma'am. Very good evening. Jai Hind. Hello, Jai Hind, good evening. How you doing? कैसे हो आप? I'm good. How are you all? Abhi we are waiting for more नहीं kids. नहीं, we can start. We can start. Okay, okay. ये सीरियस बच्चे हैं जिनको सवाल पूछने हैं आपसे बहुत सारे. And Sorry, my voice is not very good today. मैम Actually, I had fever. हाँ, तो वो भी थोड़ा सा after effect is there. हाँ, तो मैम की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे मैम को. ठीक है. नहीं नहीं, that is okay. आई एम सॉरी, मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा. मेरे को लगा कि यार जल्दी कर दिया. मेरे को 1-2 दिन का टाइम लेना अरे चाहिए. नहीं नहीं, ये तो ठीक है, दिस तो पार्ट एंड पार्सल. बस मैं बता रही हूँ कि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये ऐसी ऐसे कैसे बोल रहे हैं टाइप ना. तो आई सो थिंक वी कैन स्टार्ट. हाँ. सो वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर मैम. ये अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म है मेरा, जहाँ पे लाइक एज बोथ ऑफ अस आर टेकीज, तो मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ डिफेंस एग्जाम्स के लिए. एंड आई ट्रेन देम ऑन रिटन एग्जाम्स एंड देन इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशंस एंड ऑल. और अभी रिसेंटली कुछ समय पहले, जैसे इन इन आवर लास्ट कन्वर्सेशन वी हैड कोऑर्डिनेटर ज्योति रानी मैम. तो यू नो ज्योति मैम. सो शी वाज ऑन मिराजेस. एंड अभी आप आए हो, तो यू आर द सेकंड टेक्निकल ऑफिसर फ्रॉम द एयरफोर्स हु इज हियर इन दिस कन्वर्सेशन. तो जैसे आप ही ने बोला था, मैं तो पॉडकास्ट के लिए आपको आई टोल्ड यू कि मैम चलो पॉडकास्ट करेंगे. मैंने बोला नहीं, तू ऐसे कर. बच्चों को सवाल पूछने थे. मैंने कहा हाँ चलो यही करते हैं फिर. सो मज़ा आएगा काफ़ी. वेलकम टू द शो मैम. एंड आई होप कि दिस सेशन विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू दीज किड्स आउट देयर हु whosoever has joined aspire to become an officer like you have served in the Indian Air Force as a techie. So थोड़ा सा एक ना क्विक इंट्रोडक्शन अगर आप दे पाओगे तो इन लोगों के लिए दैट वुड बी ग्रेट. एंड देन फिर इनके हाँ, क्वेश्चंस हम. sure, sure. So, good evening, everyone. Jai Hind. I am a SCON leader, Neha. I have done my schooling from Saint Mary's Senior Secondary School, Haridwar. I belong to Haridwar. And after that, I did my BTech from Pantnagar University, that is near Haldwani, Uttarakhand. And during my final year of BTech, I gave exam in February 13, AFCAT, and through which I cleared my written. And then I got selected and went to SSB in Dehradun. I cleared my SSB in the very first attempt. And after that, I joined Indian Air Force as an aeronautical engineer. We call it AEL. There are two types of aeronautical engineers, AEL and M. So I was into electronics. And in Air Force, I got trained in Me-17 helicopters. I was trained on all three variants, like Me-17 1B and V5. And I was working on the helicopters throughout my decade of tenure there. And January this year, I had retired, and now I'm here with you all. So one thing I would like to say that it was my journey, and the SSB part, the written part, like everybody's experience is different. What we will do, you can ask me questions. I can tell you from my point of view that what I did, how I like perceived things when I was on that particular position, or I was sitting there like you all are here preparing for your SSBs. I know that all of you might have returned your cleared your returns, so that's why we are here and having this discussion today. And pardon me if any changes in the procedure have been done. So since I gave it in 2014, so it might happen. So that Shivam will help me to clarify if any change has been done because he is current in all the exams and everything, and he is preparing you all. But yes, whatever best I can tell you as an officer or as perception of what I had and how I did my whole SSB. Surely I will do that. मैम देयर हैज बीन नो चेंजेस इन द सिलेक्शन प्रोसीजर एज ऑफ नाउ. सो जो उस टाइम पे Yeah, था. but when I open internet, it shows like as if because in our time there was no internet and Google, and I never used any source of information through Google. So when I just write SSB, like there are thousands of things, so it is so confusing, like whether so many things have changed or it is just the Google is popping up so much of data. गूगल इज पॉपिंग अप सो मच ऑफ डेटा. इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज हैपनिंग मैम. वो बहुत ज़्यादा Yes, डेटा आ yes, रहा yes. है. हम लोग आई स्टिल रिमेम्बर Correct, correct.
यू ज्वाइंड एएफए इन 2013, आई वाज इन माय थर्ड ईयर ऑफ माय बीटेक। तो उस टाइम पे बहुत ओके। कम रिसोर्सेज होते थे, जब मैं भी कॉलेज से निकला था 14 में। कम रिसोर्सेज थे, हाँ, इतना इतना अभी अभी तो मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे। उस तो टाइम तो हम ऐसे, वो बुक भी आती थी ना एसएसबी इंटरव्यू, तो मैंने सोचा ये लूं या रहने ही दूं, रहने ही देते हैं चलो। सो गूगल तो मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया। अब एक सवाल है कि हाँ। बीटेक कर रहे थे, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, प्लेसमेंट वगैरह। एक बार मैं थ्रू, मतलब व्हाट वाज द माइंडसेट, ये मेरे को पूछना था आपसे कि ओके। व्हाट वाज द माइंडसेट कि यार जाना है तो फौज में, मतलब आपने सोच लिया था कि यार मेरे को बीटेक करने के बाद एयरफोर्स में जाना है या फिर फौज ज्वाइन करनी है, या फिर इट हैपेंड लाइक दैट? यार मैंने सोचा था 12th के बाद एनडीए में जाना है। अच्छा, तो आई हैड गिवन, आई हैव filled एनडीए फॉर्म आल्सो व्हेन आई वाज इन 12th, व्हेन आई क्लियर्ड माय 12th। आई जब वाज लड़कों की नॉट अवेयर क्वालिफिकेशन दैट सही थी। लड़कियां नहीं जाती हैं। हाँ, एंड courtesy to like एनडीए, दे हैव रिप्लाइड टू माय फॉर्म आल्सो। अच्छा। एंड वो लेटर अब मैं ढूंढती हूँ कि मैंने कहीं संभाल के रखा होता काश। सो दे हैव रिटन मी कि सॉरी वी डोंट टेक फीमेल कैडेट्स। तो जब वो एनवलप आया ना, वो पोस्टमैन लेके, वो इंडिया पोस्ट से, तो मुझे लगा कि मेरा हो गया एनडीए में। आई हैव क्लियर्ड एंड आई कैन जॉइन एनडीए नाउ। सो दैट वाज द माइंडसेट। बट यस, जब वो नहीं हुआ तो फिर मुझे थोड़ा डाउट आ गया कि अच्छा लड़कियां नहीं जाती डिफेंस में। देन आई केम टू नो कि अच्छा एनडीए इज ओनली फॉर बॉयज। लकीली नाउ इट हैज ओपन फॉर बोथ ऑफ देम, मेल एंड फीमेल। बट यस, ड्यूरिंग माय टाइम आई वाज द वन जो 12वीं में एनडीए के लिए अप्लाई कर चुकी थी। तो होप यू कैन लाइक नाउ एनालाइज कि कौन सा माइंडसेट होगा बस ये। बट यस, देन बीटेक में लाइक व्हेन वी वर इन फाइनल ईयर और वो सब चल ही रहा होता है, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सो मेनी थिंग्स। फ्यू मस्ट बी देयर हु विल बी लाइक कि गेट क्लियर करना है। सो वो मुझे क्लियर था कि गेट तो देना ही नहीं है, मतलब हम्म, बीटेक के बाद एमटेक नहीं हो पाएगी। वो ज्यादा हो जाएगा टेक्निकल। तो आई बट लकीली और अनलकीली फिर एयरफोर्स ने पकड़ पकड़ के पढ़ाया कि नहीं चलो अब तुम एरोनॉटिकल में डिप्लोमा करोगे। सो पढ़ाई ने पीछा नहीं छोड़ा। बट यस, आई वाज क्लियर दैट ओके चलो आई विल गिव दिस डिफेंस एग्जाम। एंड दैट्स हाउ आई गेव इट इन फेब ओनली, इन माय लास्ट सेमेस्टर। एंड मुझे याद है हम 4 दोस्त थे, चारों उत्तराखंड से। अपना सुबह सुबह एक एक कॉमन कारपूल करके वी रीच्ड देहरादून। और वहां पे फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग हुआ और वो तीनों घर चले गए और मैं वहां अकेले खड़ी हूँ। मैं सोच रही हूँ ये तो हम पिकनिक की तरह आए थे और ये क्या हो गया, अब कौन रहेगा यहाँ पे। देन आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स देयर। सो इट वाज गुड। अमेजिंग मैम। तो अच्छी जर्नी रही काफी। तो अब मैं हाँ। यहाँ पे कमांड देता हूँ हमारे बच्चों को। तो बच्चों मैं यहाँ पे हाँ। लाइक जैसे, अच्छा मैं बीच में एक चीज बता दूं मैम, दिस इज अ रिकरिंग मीट इन केस द, हम लोगों के पास 40 मिनट्स, हम लोग जूम का फ्री वर्जन यूज करते हैं। 40 मिनट के बाद अगर ये लिंक अच्छा। ब्रेक हो जाएगा, तो बच्चों को मैं बोलूंगा कि यू कैन ऑल्सो रीजॉइन द सेम लिंक, आप लोग सेम लिंक पे आ जाएंगे। वैसे मैं रिमाइंडर दे दूंगा जब हमारे पास 10 मिनट बचे होंगे तो। पर मैं यहाँ पे बच्चों को अभी इंकरेज करूंगा कि यू गाइस कैन आस्क मैम, अभी आपको मौका मिल रहा है। नाउ द बैटन इज बीइंग पास्ड ऑन टू यू बाय मी, कि आप पूछो। क्योंकि मेरे को तो भाई, मैं तो बहुत सारी बातें कर ही लेता हूँ सबसे, अपने सीनियर जितने भी मेरे बच्चे हैं। तो मैम कल मेरी ज्योति मैम से बात हुई थी एंड 1.5 घंटे लगातार। ओके। ओके। तो मेरे को तो भाई मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो आप लोग पूछो, हु वुड लाइक टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड्स गाइस। आप लोगों के माइक्स यू कैन अनम्यूट एंड देन यू कैन आस्क जो भी तुम्हारे दिल में बाय सवाल। द वे आई वुड लाइक टू ऐड कि शिवम ने मुझे पॉडकास्ट के लिए बोला था। बट आई हाँ। वाज लाइक कि पॉडकास्ट तो ठीक है, मतलब वो तो हम कर ही लेंगे, बट आई थिंक दिस इज मोर रिक्वायर्ड सिंस योर एसएसबी इज नियर बाय। तो आई वाज विलिंग कि हम लोग बात करें। तो लेट्स टॉक नाउ। आई Yes. थिंक दाजी, हाँ, यू कैन स्टार्ट। हाँ, दाजी एंड देन विपुल का Yes, क्वेश्चन है। ma'am. दाजी प्लीज आस्क, हाँ। यस। Good evening, ma'am, and Jai Hind. Ma'am, I हाय। would like to ask a question that how was your life in the Indian Air Force as a aeronautical engineer? ओके। Means, have सो you? being an nautical engineer in Indian Air Force, I'll not say it is one of the toughest branch, but yes, like when whomsoever is related to flying in Air Force, okay, like be it ATC or be it technical or be it pilot, who's involved in active flying, like direct you are part of the flying activities. So it is hectic. I'll not say it is very smooth and up daily आराम से सुबह 10 बजे उठ के जा रहे हो,
ठीक है ऑफिस का काम कर लिया, एक बढ़िया सा ऑफिस है, ऐसा नहीं है ना. इट इज लाइक इट डिमांड्स योर मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ बोथ. ओके, so that's what I experienced. But yes, at the same time, like I during my training days only, I was very much fascinated by helicopters. एंड जब वो आवाज आती थी ना, जैसे बचपन में ही होता है ना कि मतलब हेलीकॉप्टर जा रहा है तो बाहर जाएंगे ही देखने की, जाना ही है. मतलब अभी भी होता है मेरे साथ. काम करने के बाद, एयरपोर्ट छोड़ने के बाद अभी भी हेलीकॉप्टर जाता है तो मैं देखती हूँ ऐसे खड़े होके ना उसको. तो दैट वाज देयर. तो मैं अपने ट्रेनिंग में लाइक दे गिव अस चॉइस लाइक व्हिच एयरक्राफ्ट यू वांट टू वर्क अपॉन for all the or which system you want to work upon, like missiles, aircraft, and there is like communication also. So that time I was clear that I want to work only on helicopters. So yes, it was quite demanding and challenging also. I have served in J&K. It was a CI area. And मतलब कोई रात ऐसी जाती थी कि तुम मतलब रात को सोए और सुबह ही उठोगे अब सीधा, ऐसा नहीं होता था. एंड तो इसलिए मतलब आई विल से कि इट इज नॉट अ केक वॉक, बट यस इट इज वेरी सेटिस्फाइंग इफ यू लव, लाइक यू हैव टेकन विद योर ओन चॉइस. लाइक दे वर माय फ्रेंड्स हु वांटेड कि नहीं उन्हें कम्युनिकेशन सिस्टम पे ही काम करना है, सो दे वर देयर. देवर फ्यू वांटेड टू वर्क ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट, क्योंकि उन्हें फाइटर एयरक्राफ्ट देख के वो एक पैशन, एक फील होता था कि नहीं दिस इज द थिंग वी वांट टू. So it is totally choice based and merit based also. Like your merit should also coincide with what you are asking for. So luckily I got helicopters, and I never regretted it in my 10 years of tenure, and till last I was working on the same. So yes, that was the life. And if you want to ask a day, so day I can tell you it may start at 4 in the morning. It may start at 6 for some. अब जैसे ईस्ट में सनराइज जल्दी होता है तो डे भी जल्दी स्टार्ट होगा. Like because sunset is too early. So after 4:30 it is totally dark. So yes, flying starts quite early in the morning. Similar way in if you go to south, it is like normal 7:30. So that was the thing. And I have served in like glacier also. So there are days to start at 4:30 we used to be on the aircraft. So लेकिन ये होता था कि हाँ वो एक दिन का टास्क करके ना एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील कि यू हैव डन समथिंग फॉर नेशन एंड यू हैव डन समथिंग with army, your sister services. And जब मतलब मुझे याद है कि वो ग्लेशियर में जब हेलीकॉप्टर की आवाज जब वो लोग सुनते हैं ना, मतलब उनका भी दिन पूरा हो जाता है कि चलो आ गया, उनका सामान पहुंच गया आर्मी ट्रूप्स का. एंड मतलब एक दूसरे को देख के ना एक अलग सी फीलिंग होती है. सो दैट वाज द लाइफ, दैट वाज माय लाइफ. एंड मैम एक मेरा सवाल है, इसके इसी के क्वेश्चन से मेरे को भी क्यूरियोसिटी, बिकॉज आई वाज समवन हु वांटेड टू बिकम अ पायलट, आई कुडंट मेक इट, पीएबीटी में फेल हो गया था, तो मैं मैकेनिकल ओके. वाला, तो मैंने कहा फिर भाई एरो पकड़ेंगे, ओके. फिर आई विल गो फॉर एरो देन, बिकॉज यू हैव व्हेन यू आर एन इंजीनियर यू हैव चॉइसेस, यू कैन गो टू एनी ब्रांच. करेक्ट. सो करेक्ट. मेरे दिमाग में सवाल ये है कि वंस आई विजिटेड अ सीनियर ऑफ माइन इन अ यूनिट, एंड चेतक चीता आज भी उड़ा रही है एयरफोर्स, तो मतलब उस इतने पुराने एयरक्राफ्ट को, इवन दो दे आर वर्सेटाइल मशीन्स एंड यू हैव बीन अ हेलीकॉप्टर एरो इंजीनियर, सो क्या राज क्या है, मतलब कैसे इतना पुराने मशीन्स को आज भी एयरफोर्स इतनी इंटैक्ट तरीके से इतनी एक्सपर्टीज के साथ कैसे उड़ा लेती है मैम? क्योंकि मेरे जैसे लोग होते हैं वहां पे. ऑन अ लाइटर नोट. नहीं नहीं, सी देर आर लाइक सेट पैटर्न फॉर एवरीथिंग. देर आर वेरी स्ट्रिक्ट एसओपीज. लाइक ये पार्ट पहले होना है, 1 होना है, उसके बाद 2 होना है, उसके बाद 3 होना है. तो इट हैज टू बी इन द सेम सीक्वेंस. इट इज अनलाइक एनी, I will not say civil organization. Like flying is everywhere. It is serious business only. But yes, in Air Force, it is more of all SOPs and all procedures. And wo by virtue of uniform and by virtue of our training, we become so trained that we follow it also. Like civil में फिर भी ऐसा हो जाएगा कि शायद कोई सोचे कि नहीं ठीक है, मतलब क्या फर्क पड़ता है. And other thing is कि like you are involved in working with something which involve life taking or life मतलब एक जने की लाइफ इन्वॉल्व है ना. सो वेन एवर यू ऑफर द एयरक्राफ्ट और वेन एवर दोज मशीन्स आर गोइंग फॉर सम वर्क, सो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं होता ही है कि यार ये जा रहे हैं, ये सेफली वापस लैंड करेंगे, है ना, तभी आपका डे कंप्लीट होगा. तो आई थिंक ऑल द टेक्नीशियंस, ऑल द ऑफिसर्स हु आर वर्किंग इन द टेक्निकल साइड ऑफ दिस, मेरे ख्याल से मतलब वो शॉर्टकट वाला कुछ नहीं चलता है. तो इसीलिए वो मशीन्स भी अच्छे से चल रही हैं, है ना. जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल लाइक यू
all the नहीं, that was on a lighter note. मेरे से बहुत मतलब बड़े, all the बहुत सीनियर people, बहुत लोग it is it is not only कि जो एयरफोर्स में हम लोग एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हुए देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल वो फ्लाई कर रहा है, उसके बैकएंड में भी बहुत मेहनत होती है। एंड आई हैव सीन माय ओन। Exactly. Like Daji asked me, so before flying also you have to be there because you are preparing the complete set, and it is not like you are preparing a single aircraft. It is like you are preparing 8, 10 aircrafts at a time, aircraft at a time. So मतलब 15 भी होते हैं, 14 भी होते हैं. Depends on the size of the strength of the squadron. And वो करने के बाद when it is flying, that time also you have to be there because कोई भी emergency आ सकती है. It is again, I said, it is a very serious business flying. So, and once it comes back, that time also you have to like be there for all the checking purposes. There are certain checks which have to be done after flying. So it demands lot of background work. वो 1 घंटे की जो flying होगी उसके लिए like 6 hours of preparation will be there to and fro both ways. And it is same for all the branches, not only Air Force. Not only, sorry, technical, sorry. I'm saying here. द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू। वही वाली कहानी है। हाँ, तो हाँ, एंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू मैम। ये सारे एस्पेक्ट्स पे आज तक पूरे यूट्यूब के इतिहास में आप किसी भी एजुकेटर ने ऐसे कोई सवाल पूछे नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बोर्ड ऑन दिस। अभी एक बच्चा है, fine. वी हैव 10 Okay, मिनट्स लेफ्ट इन दिस मीटिंग, वी विल रीजॉइन अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। विपुल का सवाल sure. अभी हम लेते हैं। दाजी, यू हैव एनीथिंग एल्स टू आस्क? कुछ और पूछना है दाजी? सो Yes, ma'am. My second question was that yes, ma'am. Yes, sir. My second question was how you used to means is there any sports you used to participate during your the task which you have completed throughout the day? Means what was the fitness routine the Air Force used to follow for each and every person? Okay. So, like fitness wise, yes, daily there is PT, parade, there are a number of activities. And when you join a squadron or unit, so it is kind of a family. So it depends, like, but your fitness will be taken care. And like in the evening, you have all the sports facilities inside also, like you have gym, you have badminton court, you have squash court, whatever you say. So yes, fitness is part of your daily regime, and but yes, as compared to army, I will say it is as compared to army, it is not that stringent because your more of the time will be involved in if you are going as a technical officer. So your more time will be required on the machines because it takes hell lot of time. But yes, in spite of that, yes, daily morning you will go for PT, for a run, for exercises. Yoga is also there. So yes, that is a part of your daily routine, no doubt. Okay, ma'am. Thank you. यस, Welcome. नाउ वी वुड बी गिविंग चांस टू विपुल। हाँ, यस विपुल, पूछो आप अपना सवाल। जय हिंद मैम। Hi और Jay. एयरफोर्स का मुझे वैसे थोड़ा पता है क्योंकि मेरे पापा XMW रह चुके हैं एयरफोर्स से। Okay. तो मैं SSB से रिलेटेड सवाल पूछूंगा। जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसा रहता है SSB में, एंड स्पेशली हाउ वाज योर ट्रेनिंग डेज एंड इवन आफ्टर दैट? Okay. So SSB में like जो फर्स्ट राउंड वाला पूछ रहे हो या सेकंड डे, मतलब which psychology test you are asking? The सेकंड डे, screening round? सेकंड डे। Second day. Okay. So second day ka, okay, second day ka I remember like there were two tests. One was the picture perception test, and another was based on the words. Like they'll flash words, and then I have to write whatever first comes to my mind. So experience was like I'll tell you my story. I will tell you one or two story. So I think you will be able to relate to it better in a better way. So one of the pictures shown to me was one old lady was coming out of a building and two people were holding her. So जब ये पिक्चर शो करी, सबने अपना लिखा, एंड व्हाट आई व्हेन आई लिसन टू द ग्रुप, जैसे सब मतलब I don't know what will come to your mind after seeing this picture. Very old lady coming out of a building and उसको दो लोगों ने पकड़ा हुआ है. What you will think of? First you tell me. मतलब उसको बाहर निकालने में मदद किया जा रहा है कि बाहर आने के बाद उसका पैर में चोट लगा तो दो आदमी आके उसकी मदद कर रहे हैं। हाँ, तो I feel this was one place where I would have made difference. I don't know. I'm not very sure. But what I had written that time, I wrote कि वो village की सबसे old lady है, ठीक है?
और विलेज में लाइक जैसे उस टाइम पे वोटिंग सिस्टम होता था ना, बैलेट मशीन्स आई थी। तो मैंने ये लिखा कि वो उसकी ट्रेनिंग लेने गई थी और वो अब वापस आ रही है अपने पूरे गांव को ट्रेन करने के लिए। तो मैंने ऐसे लिखा था कि शी इज द हेड ऑफ द विलेज बट शी इज वेरी ओल्ड बट सीनियर मोस्ट वही है, तो शी हैज ओनली गॉन बट उसको लोग हेल्प करके ला रहे हैं। नाउ शी विल इम्पार्ट द सेम ट्रेनिंग टू द होल विलेज। बट जब मैंने ग्रुप की स्टोरी सुनी तो सबने यही लिखा कि वो हॉस्पिटल से आ रही है, वो चल नहीं पा रही है। तो आई थिंक इन पिक्चर परसेप्शन टेस्ट व्हाट स्टोरीज आई हैड रिटन दैट टाइम, अब जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब अगर मैं भी उन दोनों स्टोरीज को सुनूंगी कि एक हॉस्पिटल वाली और एक ये वाली, तो मैं भी बोलूंगी कि यार दिस इज बेटर। यस राइट पीपल, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यस मैम। है ना। तो वो दो परसेप्शन होते हैं, उसका नाम ही पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है, लाइक हाउ योर तुम्हारा परसेप्शन क्या है उस पिक्चर को लेके ना। अनदर स्टोरी आई टेल यू कि एक बच्चा खड़ा है एंड उस टाइम पे आई थिंक हाँ एक फ्लड जैसा कुछ सीन था, फ्लड कहो या सुनामी कहो, सब पूरा मतलब ऐसे सब बिखरा हुआ है, इस टाइप की एक थोड़ी फेडेड सी पिक्चर थी। तो आई रिमेम्बर आई हैड रिटन कि मतलब वो बच्चा वहां पे था उसके विलेज में, लाइक फ्लड आया है जो भी हुआ, बट उसके बाद उसने पढ़ाई करी एंड ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर एंड ही एस्टैब्लिश 2 लाइब्रेरीज इन हिज विलेज। एंड अब वो सी के पास खड़ा होके वो देख रहा है, मतलब वो अपना पास्ट को रिकलेक्ट कर रहा है कि ऐसा हुआ था करके ना कुछ साल पहले। तो मतलब मैंने ऐसी स्टोरीज लिखी थी। तो फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट आई थिंक बिकॉज एज एन ऑफिसर यू विल बी अंडरगोइंग लॉट ऑफ प्रेशर, मेनी काइंड्स ऑफ सिचुएशन जो तुम प्लान नहीं कर सकते, है ना। मतलब मैंने अपने कोर्समेट्स को जाते हुए भी देखा है ना। कोई क्रैश हो गया उसमें तुम्हारा कोर्समेट था, तो बहुत सारी ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस आती हैं। तो आई थिंक साइकोलॉजिकल टेस्ट इज लाइक उन सिचुएशंस में तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज कि ट्राई, मतलब तुम उसकी दोनों साइड देखने की कोशिश करो कि उसमें पॉजिटिव क्या दिख रहा है और नेगेटिव क्या दिख रहा है ना। क्योंकि नेगेटिव तो फर्स्ट परसेप्शन तो होता ही है, मतलब कि वो दिखेगा ही, किसी को खून निकल रहा है तो तुम यही कहोगे चोट लगी होगी, है ना। लेकिन क्या पता वो किसी को बचा के आ रहा हो, या फिर क्या पता वो कुछ और किसी और के लिए फाइट करके आ रहा हो ना। तो दैट कैन ऑल्सो बी द अदर साइड ऑफ दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट। एंड वर्ड्स में तो आई थिंक यू कैन नॉट फेक फेक करने की जरूरत भी नहीं है, लाइक यू हैव टू बी योर ट्रू सेल्फ ओनली। क्योंकि इतने सारे राउंड्स हैं कि तुम एक में कर लोगे, दो में कर लोगे, बट देन आफ्टरवर्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग, बीइंग इंटरव्यूड, दैट टाइम यू कैन नॉट फेक। तो यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, बट यस तुम कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो या थोड़ा सा याद दिला सकते हो कि यार ये इसकी गुड साइड है, ये बैड साइड है। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज। आई डोंट नो हाउ, लाइक देयर आर सो मेनी अकेडमीज नाउ, हाउ दे ट्रेन यू ऑल एंड कैसे रहता है, मतलब दैट आई डोंट नो, बट दिस वाज टोटली पर्सनली माय एक्सपीरियंस। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस मैम। बहुत और आपने मैंने एकेडमी डेज के बारे में पूछा था, वो शायद आपने बोला नहीं। academy days में training, yes, training is like training is being done in a very planned manner. There are like all the instructors, and since your father was also, he is still serving or he retired? रिटायर्ड मैम ड्यूरिंग द 2022 सितंबर। हाँ, तो मतलब उन्होंने भी सर्व किया है। तो द ट्रेनिंग इज इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, लाइक कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले दिन कहेंगे कि 50 किलोमीटर भाग के आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। इट इज अ वेरी स्ट्रीमलाइंड ट्रेनिंग, ठीक है। एकदम ग्राउंड लेवल से दे विल स्टार्ट मेकिंग यू वॉक फर्स्ट, ब्रिस्क वॉकिंग, देन रनिंग, बहुत ही प्रॉपरली वे में होता है। अगेन आई वुड से ट्रेनिंग इज नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट ओनली। भाई मिलिट्री की ट्रेनिंग है तो डिफिकल्ट होनी भी चाहिए, है ना। इजी ट्रेनिंग करोगे तो फिर फौजी नहीं बन पाओगे ना। तो ट्रेनिंग इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट, बट यस आई थिंक वहां पे माइंड गेम ज्यादा चलेगा तुम्हारे फिजिकल स्टेमिना से। लाइक अगर तुम्हारा, एंड इट इज लाइक तुम्हारा अगर 40 लोगों का ग्रुप कुछ कर रहा है ना, तो तुम्हारी मोटिवेशन कहीं नीचे ऊपर जाती रहेगी, बट वो एक ग्रुप की जो वाइब होगी वो तुम्हें साथ लेके चलेगी, ठीक है। ट्रेनिंग का पूरा मकसद ही है कि तुम्हें एक टीम में काम करना सिखाना, एंड यू आर पार्ट ऑफ अ टीम एंड यू कैरी एवरीवन अलोंग। तो ट्रेनिंग का एक बार एसएसबी क्लियर हो गई, ट्रेनिंग तुम्हारी वहां पे है इंस्ट्रक्टर्स तुम्हें क्लियर कराने के लिए, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। वो होता है ना मैम, तो आपका बट टेक्निकल ट्रेनिंग एफटीसी, हेल्थ एंड फूड। हाँ तो आपका टेक्निकल ट्रेनिंग एफटीसी बैंगलोर में हुआ होगा। हाँ, टेक्निकल ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग वाज डन इन डुंडीगल एंड देन वी मूव टू बैंगलोर एएफटीसी। और फिर एएफटीसी के बाद आई वेंट टू बागडोगरा फॉर माय
specialization in helicopter. Okay, great. So बच्चों, we will be rejoining again as we have less than a हाँ, minute. sure. All of us please rejoin and then we will start the conversation from there onwards. Thank you, ma'am. Let's rejoin once again.